Output devices. Output devices. The output devices are used to convert the computer produced output into human readable form. The output devices take information from the computer and present it in the form of projection, display or on paper. आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेती हैं और क्या करती हैं ह्यूमन की रीडेबल फॉर्म में इसको डिस्प्ले कर देती हैं, जैसे प्रोजेक्टर पे या उस पे डिस्प्ले स्क्रीन पे या फिर पेपर पे एज अ प्रिंटर। डिफरेंट तरह की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोनीटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। The most general example of an output device is a monitor. It is also known as a visual display unit, and the major function of a monitor is to display the processed data like image, video, text, audio. A monitor arranges the microscopic dots known as pixels in a rectangular pattern to make image. The number of pixels present the sharpness of an image. मॉनिटर क्या करता है, डाटा कंप्यूटर को डाटा से लेकर उसको इमेज में या वीडियो में या टेक्स्ट में ऑडियो में डिस्प्ले कर देता है। और इसका मेजर जो अरेंजमेंट होती है वो वर्टिकली होती है। पिक्सल की जो अरेंजमेंट होती है वो वर्टिकली यानी कि इमेज को शो करता है। और ये क्या करता है, इसके पिक्सल्स होते हैं जो इसकी इमेज की शार्पनेस को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। Monitor are further classified into two types: cathode ray tubes and flat panel display. Cathode ray tube Cathode ray tube monitor are used cathode ray tube that helps to produce image in the form of video signals on the screen. In short, CRT generate a beam of electron with the help of electron gun that stick the inner surface of the phosphorescent of the screen to generate image. सी कैथोड ट्यूब के ज़रिए इमेज को जनरेट किया जाता है, जो कि वीडियो एज अ वीडियो सिग्नल्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन गन की मदद से जो इनर सरफेस होता है स्क्रीन का उस पे फास्फोर्स की इंक को स्ट्रिक किया जाता है। द CRT मॉनिटर होल्ड मिलियन ऑफ फास्फोर्स डॉट्स इन 3 डिफरेंट कलर: रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसमें 3 मिलियन ऑफ डॉट्स होते हैं जो जिसमें डिफरेंट तरह के कलर होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन। द शार्पनेस एंड द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर डिपेंड ऑन द नंबर एंड द साइज ऑफ दीज पिक्सल्स। Flat panel display. A flat panel display uses liquid crystal technology or plasma to generate output. In such devices, light is passed through liquid crystal to form pixels. Flat panel display have lesser volume, weight, and power consumption than a CRT. They can be put on the wrist or could be hung on the wall. Some example of flat panel display are calculator, video games, monitor, laptop, computer, and graphic display. Printer. Printer are another common example of output devices. Printer operate by producing a copy, typically a hard copy or Xerox copy, of the information transmitted by the computer. The printer receives electronic data from the computer and produce a hard copy of the processed data. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस है जो क्या करती है कि कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलते हैं वो उसको हार्ड कॉपी में ट्रांसमिट कर देती है। प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। Impact printer. An impact printers, firstly the characters are printed on the ribbon which is then stamped on the paper. In other words, we can say that impact printer uses a print head or hammer to print the data on paper. The hammer or print head stick on ink ribbon against the paper and the characters start printing the paper. इम्पैक्ट प्रिंटर में यानी कि प्रिंट जब इमेज या कोई कैरेक्टर प्रिंट होना होता है तो वो क्या करता है, रिबन पे इंक को स्प्रेड करता है और वहाँ पे वो जो कैरेक्टर होते हैं वो पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं, किसके ज़रिए, प्रिंट हेड के ज़रिए या हमर के ज़रिए। सम एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
Decimal printer, line printer, chain printer. Non-impact printer. Non-impact printer do not use any hammer or print head to stick the ink ribbon. These printers print characters on image without using ribbons. Non-impact printers are often known as page printer because they print one full page at a time. Some example of non-impact printers: laser printer and inkjet printer. Impact printer, decimal printers. Decimal printers print the character by using metal hub and spokes. In these spokes, characters are printed when these spokes impacting on ribbon and the paper. This is called decimal printer. It produces high resolution result comparison as dot matrix, so it is called letter quality printer. It runs in horizontal direction. This type printer is slow. Dot matrix printer. Dot matrix printer is also called impact printer, which is very soft at printing time. It has lot of pins at printer head. It print a dot by attach ribbon of each pin on paper. Joining lot of dot make a character. It has a vertical group of pin in a print head. Drum printer. These printers print the line by rotating drum having a ring of characters for every print position. The hammer clean every character of the drum at the same time. Chain printer print the line by rotating chain having ring characters for every print place. Really the work device of this print like to the drum printer. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।